Hello everyone, a very warm welcome to all of you on the platform of SuperGrads CAT. Today we are here to discuss one of the very important things which is absolutely must before starting the preparation for CAT 2024 is that what are the most important topics you need to study before you are thinking of preparing for CAT, or if you are in the journey of the CAT preparation, then what is the exact number of questions, what is coming from different topics, and what are the expectations. So let's quickly check it out. Okay, the first and the foremost thing is if some of you are still not aware about the fact how the examination conducts, you need to see this, like what are the various sections and how the number of questions are distributed. If I talk about VARC, there are 24 questions asked generally. Okay, I will use this word generally or because we are doing this thing based on the previous CATs. Okay, so last year CAT 24 questions was from VARC, 20 from DILR, and 22 from QA. The next classification is how many of them were MCQ and how many were of them theta. Type in the answer. Means you have to, there would be no options available for you. You have to write the answer in the space provided by them with the help of the keyboard. So 19.5, 15.5, 14.8. So as you can see, number of theta questions are rising. This means you need to prepare thoroughly now because you won't be having the options for your rescue. So you should be good with the topics now. The questions of theta are rising day by day. Sectional time limit 40, 40, 40. Equal section time division. Total 2 hours. Total number of questions 66. 66. And total minutes is 120 and marks 198. 3 marks for every correct answer. 3 marks for every correct answer. Now, this is also a very interesting point. For every correct answer, you will get plus 3. For every incorrect, you will get minus 1. For non attempted, no marks is going to be awarded and neither it is going to be deducted. However, this is only valid for MCQ type because in the theta, there is no negative marking. In the theta, there is no negative marking. What I mean to say by this point is if you if you write any answer for these 8 questions as well and all of them are correct, still you won't get any negative mark for it. So here you have a fair chance of typing whatever you want. If you are not knowing the answer, you can go for 0, 1, whatever is your favorite number, you can go for it, and let's check your luck. So it's a big thing. In these 8 questions, it is generally being advised in the last 1 minute or so. If you are thinking, okay, I'm not able to attempt the last 3, 4 questions, better type something. If because there is no negative marking, because there is no negative marking. Let's move on to what is our QA division. Okay, what is the recent trends, from which particular topic how many questions are coming, what are the most important topics which we need to cover, and what are the all topics we need to cover. The first thing is arithmetic. You can see a consistent 789 problems. 789 is a very good number out of 22. Okay, so arithmetic, what are the topics inside it? Percentage, profit loss discount, time and work, time speed distance, ratios, average, mixture allegations, and all. What is the good thing about spending time over arithmetic? Because once you start becoming good at one of the topics, or maybe one or two of the topics, you start becoming good at all of the topics because they are interconnected. The concept of percentages, the concept of ratios are going to be used in the time and work, in the TST, and like average is a unique topic in itself. The concept of ratios are going to be used in mixtures as well. So what is good thing about them?
You need to study these topics in such a manner, just dedicate a lot of time over them, okay, so that once one will become strong or two will become strong, rest positions will also going to rise, है ना, बाकी जो आपके टॉपिक्स हैं वो भी धीरे धीरे अच्छे होते जाएंगे समय के साथ. Algebra, recent spike in the number of questions. Recent spike in the number of question, 8 questions. Now, what comes under algebra? Progressions, AP, GP, HP. Lot of questions were from there, particularly in CAT 2023. Then comes quadratic equation, or basically equations, maybe cubic as well. Again, it is being seen there is a huge weightage of these topics coming, quadratic, cubic equations. So basically, equations is rising prominently. Now, logarithms, one or two consistent problems, one or two consistently being asked from here. I can include functions here as well. Sometimes you will find, sometimes you will not find. So majorly these are the topics which I'm discussing under the algebra, progressions, AP, GP, HP. Study them thoroughly. Quadratic equations, cubic equations, how to find out their roots, and how to solve those particular questions, and a lot of variety over them. If something is changed for like alpha and beta, how to deal with those situations. Logarithms, basic log properties. It can be commanded एक दो दिन में ही बहुत अच्छा हो जाता है टॉपिक. So you cannot afford to skip it. 2-4 दिन में ही आप अच्छे से पढ़ के और अपने एक दो क्वेश्चन को यहाँ से बुक कर सकते हो. फंक्शन इज अ लेंथी टॉपिक, बट कैट जो है वो लिमिटेड ही जोन से पूछता है. लाइक इट कैन बी आस्किंग फ्रॉम डोमेन, रेंज, फंक्शनल इक्वेशन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड मॉडुलस. तो जो पूरा 12th वाला जो फंक्शन था, उतना अगर आप कहीं भी पढ़ेंगे, इन पर्टिकुलर सब पार्ट्स को पढ़ लेंगे, तो देर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि वी वुड बी एबल टू मेक अवर क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन हॉल. अब आती है बात ज्योमेट्री की. ज्योमेट्री प्लस मेंसुरेशन, वेरी कंसिस्टेंट टॉपिक, ऑलवेज 3 क्वेश्चंस, वेरी वेरी कंसिस्टेंट. ज्योमेट्री प्लस मेंसुरेशन 4-5 सेशंस में, 6 सेशंस में, और आप कह सकते हैं 6 इंटू 3 18, 20-25 आवर्स की स्टडी में ज्योमेट्री अच्छा हो जाता है. ये एलिमेंट्री ज्योमेट्री है जो हम बचपन में पढ़ते थे 10th क्लास में. हाउएवर, दिस डज नॉट मीन कि अगर आप पढ़ेंगे नहीं तब भी क्वेश्चन बना लेंगे, बिकॉज बहुत सारी प्रॉपर्टीज आपने स्किप कर दी होंगी ड्यूरिंग दिस 11th 12th एंड ग्रेजुएशन. सो यू नीड टू स्टडी इट वंस सिस्टमैटिकली 20-25 hours, and then practice. Maybe 150 questions from your end, or maybe 200 questions from your end to book these 3 questions. Sure, short. Modern maths, PNC, probability. थोड़ा वेटेज कम हुआ है लास्ट कुछ ईयर्स में, बट स्टिल एलिमेंट्री लेवल, फंडामेंटल लेवल तक पता होना चाहिए. बिकॉज टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन के साथ अगर प्रोबेबिलिटी लगा दी कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट राम इज डूइंग दिस वर्क, तो फिर ये नहीं होना चाहिए कि अरे टाइम एंड वर्क प्रोबेबिलिटी का बिल्कुल ही कुछ नहीं आता था तो टाइम एंड वर्क भी छूट गया. तो एलिमेंट्री लेवल तक जरूर कवर होना चाहिए. इट इज योर कॉल कि आप बहुत ज्यादा डेप्थ में जाके पढ़ना चाहते हैं और नो. द वेटेज यू कैन सी फ्रॉम योर एंड. नंबर थ्योरी, और वी कॉल इट एज नंबर सिस्टम, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है. सबसे पहले पढ़ा जाता है, बहुत ज्यादा मजा आता है, बिकॉज वी नीड टू रिवाइज लॉट ऑफ थिंग्स, है ना, काफी कुछ हम स्किप कर चुके होते हैं. वेटेज इज ऑल्सो गुड इनफ, 1 2 3 थोड़ा डिक्रीज हुआ है, बट 2 का एवरेज तो आप लेके चल ही सकते हो. यू कैन टेक अ एवरेज ऑफ 2. ओके, सो 2 क्वेश्चंस आपके नंबर सिस्टम से हो जाते हैं. इससे तो पढ़ने में ही वैसे बहुत ज्यादा मजा आता है. सो ये तो आपको पढ़ना ही है काफी अच्छे से. फिर बात आती है व्हाट आई एम रिकमेंडिंग ज्योमेट्री एज मेंसुरेशन. ओके, algebra is a high recommendation, and this is what we usually cover. मॉडर्न मैथ बेसिक्स फंडामेंटल लेवल तक क्लियर होना चाहिए. कोई भी टॉपिक हो, नो मैटर वॉट एवर द टॉपिक, इट शुड बी क्लियर टू द फंडामेंटल लेवल.
हर एक टॉपिक फंडामेंटल लेवल तक क्लियर होना चाहिए। जो कहते हैं ना एबीसीडी, एबीसीडी तो हर टॉपिक की पता हो। फिर आपने उस पर बाकी कितना काम किया है, 200 क्वेश्चन बनाए हैं, कितने डेप्थ में बनाए हैं, दैट इज अ सेकेंडरी थिंग ऑल टुगेदर। बट बेसिक लेवल तक हर एक टॉपिक क्लियर होना चाहिए। बिकॉज आप देखते हैं कि फ्लक्चुएशंस आर देयर। ऐसा नहीं है कि बहुत ही कंसिस्टेंट पैटर्न है। मे बी प्लस माइनस वन यहां पर भी हो सकता है। तो फ्लक्चुएशंस आर देयर। इस बार एल्जेब्रा बहुत अच्छा आया। तो द पीपल दोज हु आर ओनली प्रिपेयरिंग द अर्थमेटिक like are not able to do that much good because वो क्वाड्रेटिक के साथ, क्यूबिक के साथ, लॉग के साथ उतनी कंफर्टेबिलिटी थी नहीं। तो वो कंफर्टेबिलिटी होना बहुत जरूरी है इफ यू वांट टू एक्सेल इन द कैट एग्जामिनेशन। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने नोट डाउन किए हैं, प्लीज लिसन टू देम वेरी केयरफुली। एक तो कोई भी पर्टिकुलर सेक्शन स्किप नहीं करना है। व्हाट आई मीन बाय दैट, होता है ना सर ये छोड़ देते हैं, कितने नंबर का आता है छोड़ देते हैं, नहीं भाई, देयर आर मिक्स क्वेश्चंस। तो किसी टॉपिक पर आपने बहुत ज्यादा काम किया और एक छोटा सा टॉपिक आपने छोड़ दिया, however the question is involving the concept of both the topics, then you will lose at that particular end। ठीक है, तो सारे टॉपिक पढ़ने हैं। इवन आई वुड रिकमेंड कि यहाँ का जो बेस सिस्टम है वो भी पढ़ना है, नंबर थ्योरी का। नंबर थ्योरी में जो हम बेस सिस्टम पढ़ाते हैं वो भी पढ़ना है। ये नहीं सोचना है कि आउटडेटेड है तो क्या करना। there can be chances na, so there is, you can see from the cat 2023, okay, it was against the expectations। don't skip any particular section, read them all, read them all at least till the fundamental level। what do you mean by fundamental level? फंडामेंटल लेवल ये है कि आपको सारे फॉर्मूले, सारे कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए उस पर्टिकुलर टॉपिक के। आपकी लेवल ऑफ डिफिकल्टी वन के क्लासरूम की शीट्स कंप्लीट होनी चाहिए। नाउ एक लेवल ऑफ डिफिकल्टी टू, लेवल ऑफ डिफिकल्टी थ्री, वो जाना है नहीं जाना है वो कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से आप बाद में डिसाइड कर सकते हैं। इफ यू स्टार्ट लाइकिंग द टॉपिक, अगर आपसे क्वेश्चंस बनने लगेंगे, वेल एंड गुड। लेकिन एक दो टॉपिक में आपके पास मार्जिन रहेगा, ओके। I'm not going into the level 3 of this particular topic because it is not my cup of tea। तो उसमें अगर बेसिक या फंडामेंटल लेवल का क्वेश्चन आ जाएगा देन आई विल क्रैक इट। अगर बहुत ट्रिकी होगा, लेंदी होगा, या फिर मुझे पढ़ने से ही ऐसा लगेगा ओके दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी, देन आई कैन टेक अ कॉल ऑफ स्किपिंग दैट एज वेल। फिर से मैंने वही बात लिखी है, एटलीस्ट कवर फंडामेंटल्स ऑफ ऑल सेक्शन। बेसिक्स सब कुछ पता होने चाहिए, चाहे परसेंटेज हो, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस हो, एवरेज हो, मिक्सचर एलिगेशन हो। एलिगेशन नहीं आता है, दिस विल ऑल्सो नॉट वर्क। सीखे, एलिगेशन सीखना कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। एलिगेशंस पता होने चाहिए, कैसे कैसे यूज किया जाता है, कहां कहां पर यूज होता है, हाउ मिक्सचर प्रॉब्लम्स, एवरेज प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व्ड वेरी इजीली विद द हेल्प ऑफ एलिगेशंस। ये आपको सीखना चाहिए। बिलीव मी इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, है ना। प्रॉपर लॉजिक से है कि कैसे ये फॉर्मूला बना एंड वेयर वी कैन अप्लाई इट। एज द नंबर ऑफ थीटा क्वेश्चंस आर राइजिंग, प्रिपेयर टॉपिक्स थॉरोली। ये पॉइंट भी मैंने ऐड किया है कि थीटा क्वेश्चंस बढ़ रहे हैं। 8 क्वेश्चंस आए थे जैसे आपने देखा इस बार, तो इनमें आपके पास कोई ऑप्शन नहीं थे। जनरली क्या होता था, हम कभी कभी डिविजिबिलिटी देख के आंसर मार्क कर देते थे, मल्टीपल देख के आंसर मार्क कर देते थे। तो एग्जामिनर्स वर ऑल्सो अवेयर अबाउट दिस पॉइंट कि ये लोग तो मल्टीपल्स देख के आंसर मार्क कर रहे हैं, डिविजिबिलिटी देख के आंसर मार्क कर रहे हैं। सो दैट इज व्हाई दे आर राइजिंग दीज टीटा टाइप क्वेश्चंस। तो दिस मीन्स वी नीड टू प्रिपेयर टॉपिक्स थॉरोली। हमारे कॉन्सेप्ट्स भी स्ट्रांग होने चाहिए, वर्क ऑन द कॉन्सेप्ट्स, देन लेटर ऑन स्पीड। वर्क ऑन द कॉन्सेप्ट एंड देन लेटर ऑन स्पीड। सो सबसे पहले कॉन्सेप्ट स्ट्रांग करेंगे, फिर आखिरी के जब when the cat would be near or maybe near about July, August, we will work on increasing our speed as well। For example, I have been a part of this year cat, 40 marks per 99.96 was there, 40 out of what, 66, okay। So मतलब ऑब्वियसली यार 40 मार्क्स मतलब कितने क्वेश्चन सही, नॉट इवन 15, it was hardly 14 or 13, yeah, 13 is sufficient, 13 is sufficient out of 22
to get this fantabulous percentile. But let's take 15 as well. 15 ले लेते हैं भाई, एक दो क्वेश्चन गलत भी तो हो जाएंगे. 16 ले लो. 15 भी अगर आप उठा लेते हैं, देन 15 इंटू 3 minutes, 45 minutes you have. So approximately आपके पास 40 मिनट है, तो 2.8 वगैरह कुछ बनेगा आपका. काफी टाइम है भाई ये. अगर कुछ क्वेश्चन 3 मिनट लेंगे, 4 मिनट लेंगे, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो 1 मिनट या 1.5 मिनट्स में हो जाएंगे. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? अगर कुछ क्वेश्चंस आपके 3-4 मिनट तक भी एक्सटेंड हो सकता है बिकॉज ऑफ कैलकुलेशन, तो फिर कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो 1 मिनट एंड 1.5 मिनट में भी हो जाएंगे. सो फॉर 15 क्वेश्चंस वी हैव अ सफिशिएंट टाइम. नाउ इट इज ये जो आपकी प्रिपरेशन रहेगी, जो आपकी जर्नी रहेगी, इसमें आप क्या सीखेंगे? व्हाट टू पिक, व्हाट नॉट टू पिक. ये कैसे पता चलेगा? व्हेन यू रीड द टॉपिक्स थोरोली. जब आपने काफी सारे क्वेश्चंस बनाएंगे साथ में, देन व्हाट विल हैपन, आपको समझ में आने लगेगा, ओके दिस क्वेश्चन इज मॉडरेट, लेट्स पिक इट. आई हैव डन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस बिफोर एज वेल. ओके, एंड सम क्वेश्चंस विल, आपको पता होगा, ओके दैट कैन बी टाइम कंज्यूमिंग, दैट इज लुकिंग लेंथी, it can consume lot of my time, so rather I can skip it at this moment of time, and if the time permits later on, then I will pick it again. ओके, तो इस टाइप से जब आप चीजों को प्रिपेयर करोगे ना, बिलीव मी, इट इज नॉट डिफिकल्ट टू स्कोर such good marks across all the three sections. Okay, and these were our results of the SuperGrads. This were our first batch. We have done a lot of hard work with these students, and they also have done a lot of hard work with us. है ना? So we have bring some good results. These are our classroom program. Majority of them are from the offline. Some of them from the online as well. Okay, so you also can crack like this. Thank you very much. See you in the upcoming sessions. Till then, have a great time. Take care of yourself. All the very best.